सम्मानित संकाय सदस्यों की देखरेख में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एम्स नई दिल्ली द्वारा विदेशी स्नातक पूर्व छात्रों को नियमित पाठ्यक्रम और अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न देशों के लगभग 400 छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन करते हैं। I came here for an elective training in cardiology and all my expectations have really been fulfilled. And AIIMS really is a state-of-art facility for research, academics and recreation. Best facility and faculty. Proud to be in AIIMS. एम्स शिक्षा के स्तर पर तो बेहतरीन है ही, यहाँ के छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के लिए जिम, स्विमिंग पूल जैसी मनोरंजन की बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध हैं एवं समय समय पर सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र के शिक्षण स्थानों के रैंकिंग में एम्स नई दिल्ली लगातार पिछले कई वर्षों से देश का सर्वश्रेष्ठ आयुर्विज्ञान संस्थान बना हुआ है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त फंड के द्वारा एम्स में 700 से अधिक बाहरी और लगभग 100 आंतरिक अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी लागत 100 करोड़ रुपए से अधिक है। इनमें विभिन्न पदों पर लगभग 1700 परियोजना कर्मचारी कार्यरत हैं। एम्स बहुत से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है और विभिन्न विषयों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोगी केंद्र भी है। एम्स में होने वाले अनुसंधान इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनसे प्रमुख स्वास्थ्य नीतियां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा उपचार प्रणालियां भी प्रभावित होती हैं। हर साल एम्स के संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा 2000 से अधिक अनुसंधान लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, जो कि बेहद प्रभावशाली होते हैं। शीर्ष 1% साइंटिफिक पेपर्स में योगदान देते हुए एम्स भारतीय संस्थानों की सूची में दूसरे स्थान पर है। एम्स नई दिल्ली ने अपनी स्थापना के समय से अथक प्रयासों द्वारा अपने संस्थापकों के सपनों को हकीकत में बदला है और कई अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करके हमेशा भारत के चिकित्सा इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। एम्स नई दिल्ली ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के बहुत से दिग्गज प्रदान किए हैं और इनमें से कई लोगों को आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कई संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार आदि के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जेसी बोस फेलोशिप आदि के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आयुर्विज्ञान शिक्षा को उत्कृष्टता तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने तथा देश भर में से आए रोगियों की अत्यधिक जटिल समस्याओं का समाधान करने और समाज में स्वास्थ्य उपचार की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एम्स का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए एम्स ने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, नया ओपीडी ब्लॉक, सर्जिकल ब्लॉक, जेरियाट्रिक ब्लॉक, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक, पेड वार्ड ब्लॉक और जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा केंद्र का विस्तार। एम्स नई दिल्ली द्वारा एक प्रस्तावित मास्टर प्लान को लागू करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत एम्स को अति आधुनिक मेडिकल विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया जाएगा, जो न केवल रोगियों की स्वास्थ्य उपचार संबंधी समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि छात्रों, रेजिडेंट्स, संकाय सदस्यों और स्टाफ की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। एम्स नई दिल्ली स्वास्थ्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। एम्स नई दिल्ली अत्यधिक जोखिम पूर्ण बीमारियों के उपचार हेतु निरंतर कार्यरत है। प्रकृति की सबसे जटिल रचनाओं में से एक है मानव शरीर, और इसके प्रति विशिष्ट अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए शिक्षा को उच्च मानक प्रदान करते हुए, अनुसंधान में नवीन कार्य करते हुए
और प्रौद्योगिकी के सबसे परिष्कृत रूप को अपनाते हुए एम्स नई दिल्ली निरंतर प्रयासरत है। विकास के पथ पर अग्रसर भारत। स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में सन 1956 में एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत सन 1956 में हुई, जब एम्स की पहली अध्यक्ष सुश्री राजकुमारी अमृत कौर ने एम्स विधेयक पर चली लंबी बहस को परिणाम तक पहुंचाया। उनकी दूरदर्शिता और मार्गदर्शन से ही एम्स विश्व स्तर के प्रमुख आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में परिणत हो पाया। My feeling is this is still the best institute in the whole country. It still has the most talented faculty anywhere in the country. समाज के हर तबके के लोगों को शिक्षा, अनुसंधान एवं उपचार प्रदान करने के तीनों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस संस्थान की नींव रखी गई थी। एम्स में लगभग 14,000 कर्मचारी दिन रात कड़ी मेहनत से मरीजों की सेवा करते हैं। हर साल लगभग 45 लाख रोगियों को ओपीडी में परामर्श दिया जाता है। 2.5 लाख भर्ती मरीजों के इलाज के साथ साथ लगभग 2 लाख ऑपरेशन भी किए जाते हैं। मैं भूल चुकी हूँ कि कभी मैं बीमार थी। मतलब कभी कभी मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, और ये सब है एम्स की बदौलत। जितना भरोसा एम्स के डॉक्टर्स के ऊपर वो मैं किसी के ऊपर नहीं कर सकती। वो ट्रस्ट उन्होंने मेंटेन करके रखा है। एम्स नई दिल्ली में 2,445 मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था है। एम्स अस्पताल एवं विभिन्न सुपर स्पेशलिटी सेंटर अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हैं। यहाँ विभिन्न विषयों के बेहद काबिल और अनुभवी स्वास्थ्य विशेषज्ञ मिलकर विभिन्न मेडिकल और सर्जिकल क्षेत्रों के रोगियों को उच्च स्तरीय उपचार प्रदान करते हैं। अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों से सुसज्जित एम्स केवल एक अस्पताल ही नहीं है, बल्कि एक पूरा मेडिकल हब है, जहां मरीजों की आवश्यकता के अनुसार उन्नत सुविधाएं मौजूद हैं। एम्स में सभी वर्ग के लोगों का सरल और जटिल से जटिल रोगों का इलाज किया जाता है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि एम्स में गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। एम्स की शिक्षा पद्धति सर्वोत्तम स्तर की है, जो नित्य नई ऊंचाइयों को छू रही है और देश दुनिया को ऐसे शिक्षक और डॉक्टर दे रही है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। एम्स में आधुनिक सुविधाओं से लैस 58 विभिन्न विभागों में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कोर्स कर रहे 3,548 विद्यार्थियों को विश्व स्तर पर सम्मानित संकाय सदस्यों की देखरेख में
प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एम्स नई दिल्ली द्वारा विदेशी स्नातक पूर्व छात्रों को नियमित पाठ्यक्रम और अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न देशों के लगभग 400 छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन करते हैं। I came here for an elective training in cardiology, and all my expectations have really been fulfilled. And AIIMS really is a state-of-art facility for research, academics, and recreation. Best facility and faculty. Proud to be in AIIMS. एम्स शिक्षा के स्तर पर तो बेहतरीन है ही, यहाँ के छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के लिए जिम, स्विमिंग पूल जैसी मनोरंजन की बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध हैं एवं समय समय पर सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र के शिक्षण स्थानों की रैंकिंग में एम्स नई दिल्ली लगातार पिछले कई वर्षों से देश का सर्वश्रेष्ठ आयुर्विज्ञान संस्थान बना हुआ है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त फंड के द्वारा एम्स में 700 से अधिक बाहरी और लगभग 100 आंतरिक अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी लागत 100 करोड़ रुपए से अधिक है। इनमें विभिन्न पदों पर लगभग 1700 परियोजना कर्मचारी कार्यरत हैं। एम्स बहुत से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है और विभिन्न विषयों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोगी केंद्र भी है। एम्स में होने वाले अनुसंधान इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इनसे प्रमुख स्वास्थ्य नीतियां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा उपचार प्रणालियां भी प्रभावित होती हैं। हर साल एम्स के संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा 2000 से अधिक अनुसंधान लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, जो कि बेहद प्रभावशाली होते हैं। शीर्ष 1% साइंटिफिक पेपर्स में योगदान देते हुए एम्स भारतीय संस्थानों की सूची में दूसरे स्थान पर है। एम्स नई दिल्ली ने अपनी स्थापना के समय से अथक प्रयासों द्वारा अपने संस्थापकों के सपनों को हकीकत में बदला है और कई अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करके हमेशा भारत के चिकित्सा इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। एम्स नई दिल्ली ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के बहुत से दिग्गज प्रदान किए हैं और इनमें से कई लोगों को आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कई संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार आदि के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जेसी बोस फेलोशिप आदि के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आयुर्विज्ञान शिक्षा को उत्कृष्टता तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने तथा देश भर में से आए रोगियों की अत्यधिक जटिल समस्याओं का समाधान करने और समाज में स्वास्थ्य उपचार की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एम्स का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए एम्स ने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, नया ओपीडी ब्लॉक, सर्जिकल ब्लॉक, जेरियाट्रिक ब्लॉक, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक, पेड वार्ड ब्लॉक और जयप्रकाश नारायण एपिक्स ट्रॉमा केंद्र का विस्तार। एम्स नई दिल्ली द्वारा एक प्रस्तावित मास्टर प्लान को लागू करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत एम्स को अति आधुनिक मेडिकल विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया जाएगा, जो न केवल रोगियों की स्वास्थ्य उपचार संबंधी समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि छात्रों, रेजिडेंट्स, संकाय सदस्यों और स्टाफ की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। एम्स नई दिल्ली स्वास्थ्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। एम्स नई दिल्ली अत्यधिक जोखिम पूर्ण बीमारियों के उपचार हेतु निरंतर कार्यरत है। प्रकृति की सबसे जटिल रचनाओं में से एक है मानव शरीर और इसके प्रति विशिष्ट अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए शिक्षा को उच्च मानक प्रदान करते हुए, अनुसंधान में नवीन कार्य करते हुए और प्रौद्योगिकी के सबसे
परिष्कृत रूप को अपनाते हुए एम्स नई दिल्ली निरंतर प्रयासरत है। Welcome again to the 68th Institution Foundation Day. The guests are on their rounds visiting the exhibition. You're also welcome to visit the exhibition over the next few days. They will be arriving here in the auditorium soon. So just a reminder to keep your phones either switched off or in the silent mode. Thank you. Our dignitaries are here.
So as they take their place on the dais, please stand, and we'll have the invocation first. Please continue to stand during the invocation, and please don't clap after the invocation is over. रागाधिरोगान् सततानुशक्तान् रागाधिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रवृतानुचिजान् ओत्सुक्यमो यो पूर्वविद्याय नमोऽस्तु तस्मै नमोऽस्तु तस्मै न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परां न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्ता अपुनर्भवं वा अष्टर्धियुक्ता अपुनर्भवं वा हरिति अन्तस्थितो येन भवन्ति दुःखा शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् शरीरमाध्यं खलु धर्मसाधनम् शरीरमाध्यं Thank you very much. So before we begin, we would like to present our heartfelt felicitations to the dignitaries on the stage. Our staff from the academic section will be presenting them with a potted plant. Firstly, to our chief guest, Professor S.P. Singh Baghel, the Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Government of India. Next to Professor V.K. Paul, member of the Niti Aayog, and our orator for this morning. Next to our director, Professor Srinivas. To our dean, Professor M. Bajpai.
and the Registrar Professor Girja Rath. Thank you. To begin this day's program, we first have the welcome address by our Director, Professor Srinivas. Thank you. Respected Honorable our Minister Sir, Professor S.P. Singh Baghel, Honorable Minister for State, Health and Family Welfare, Government of India, our own Guruji, Professor V.K. Paul, Member Niti Aayog, and today's AIIMS Diamond Jubilee Orator, my Guruji again, Professor Minu Bajpai, the Dean Academics, Dr. Girija Rath, Registrar, faculty colleagues, staff members, students from the various schools, ladies and gentlemen. It's my privilege to welcome you all to the celebration of our institution, the 68th Foundation Day. Over the 68 years, AIIMS New Delhi has become a symbol of excellence in all the facets, be it patient care, teaching, learning, research, and the good governance and everything. For a student getting trained in AIIMS Delhi, it's a lifelong goal. Of the 2 million people who take exams, 50 students are chosen. Now it is 132. And this is the standards which we maintain with respect to the intake, what we take. Even with a large number of similar institutions coming up across the country, this has become the mother AIIMS and the AIIMS of the India, sir. So this is something which we wanted to share with you. And for the past many years, the National Institutional Ranking Framework, we have been put as the #1 medical institution in this country. And that we continue to be there. And we assure you that we continue to be excelling in the NRF rankings, not only as a medical institution, but also in the research and other areas where the NRF rankings is going to go up. It's often said that among all the resources that go into the building of the institution, the most difficult is to find and nurture the human resources and the work culture, sir. आप कभी भी आप बोलते रहते हैं कि work culture is very important. That's what we stand for here, sir. AIIMS New Delhi always has that work culture, which you always appreciated, and whenever I met you, our achievements have been possible solely due to the dedication and hard work of the family of the people. The family of the people is a team, sir. It involves everybody, whether it is faculty, whether it is the resident doctors, whether it is the staff members, the technicians, and everybody. We all work as AIIMS family, and that's something which has brought us these excellent laurels, and we remain to be the #1 in this country. And it's a pleasure on us. We have been designated National Resource Center for National Medical College Network, जिसमें हम 100 मेडिकल कॉलेजेस का ट्रेनिंग और मेंटरिंग कर रहे हैं सर, NMC के हिसाब से आया है सर. और हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम है, इसके तहत हम सभी मेडिकल कॉलेजेस का हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, ट्यूटरिंग कर रहे हैं, मेंटरिंग कर रहे हैं सर. एंड एग्जामिनेशन सेक्शन से सर हमारा जो नॉर्थ सेट पहले एक बार होता था साल में, आज के दिन हम 2 बार कर रहे हैं सर, ताकि देश का जो भी AIIMS हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, इन सबका जो नर्सिंग का कैडर्स का जो एग्जामिनेशन करते थे सर, बहुत ट्रांसपेरेंटली कर रहे हैं सर ये नॉर्थ सेट एग्जामिनेशन, विच इज़ अगेन एन अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. आप मिशन रिक्रूटमेंट 0 रिक्रूटमेंट के जो चल रही है सर, उसमें भी हमारी भागीदारी है सर. इस देश का जो भी INIs है और AIIMS है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से, सारा नर्सिंग का हम नॉर्थ सेट के थ्रू दे रहे हैं सर. Research serves as one of the fundamental cornerstones of the AIIMS Trinity of Mission, sir. Research section organized the 2nd annual research day on the 18th October last year. The 2nd edition of the Directory of Research of Interest of Faculty and Scientists has been released, and this fosters a greater collaboration amongst the diverse talents within the institution and beyond, sir. AIIMS has been actively engaged in 773 extramural research projects, which have been funded by the various national and international organizations, amounting to a total grant of approximately 191 crores, sir. This is something which we always share with you, sir. In addition to the patient care, we are definitely committed and dedicated for the research which we carry out, and this is something which we wanted to share with you. AIIMS has funded over 350 intramural research projects, totaling around 7.5 crores. And in addition to that, we wanted to share with you, sir, the kind of OPD loads we have. 20 lakh patients have visited in this period. 2.5 lakh patients have been admitted,
1.5 lakh surgical procedures have been done. And today, sir, we are coming back to you for the Ayushman felicitations which you are going to do, how we are the number one in the country. And in fact, AIIMS is the first institution to start the Ayushman Bharat ABDM ka schemes. And so far, we have created 4.8 lakh ABA IDs and 3.4 lakh tokens. And for that, we are getting felicitation from the Honorable Minister in the Vignan Bhavan today, sir. This is something which we wanted to share with you. This year, those CSR, we have made functional more than 50 e-vehicles because we have become very conscious about the Clean AIIMS and the Green AIIMS initiative. And you can see, sir, more than 50 e-vehicles are flying on this institution. And I end my speech by paying my respects and tribute to the visionaries, sir. You are just telling to the media also, as you visited, that the visionaries of this the institution, the founder members of this institution, the previous staff members and the directors of the institutions, the visionaries who built this institution and once again commit to giving our best to the willingness of our nation. Jai Hind, sir. Thank you, sir. Next, we have our AIIMS Diamond Jubilee Oration, which was instituted in 2016. To introduce the speaker, I invite Professor Vajpayee, our Dean, to come forward. Thank you. Thank you, Dr. Tony. A very good morning. Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Professor S.P. Singh Baghel, Member Niti Aayog and former Head of the Department of Pediatrics at AIIMS New Delhi, Professor V.K. Paul, Director AIIMS, Professor M. Srinivas, my dear colleagues, Dr. G. Rath, Registrar, our teachers from the past who continue to be our role model, esteemed colleagues, faculty, and of the AIIMS, friends, and dear students. It is my proud privilege and honor to say in few words about the enormous work which Professor Paul has done. He is globally recognized as a pediatrician, neonatologist, medical scientist, and public health exponent. He joined All India Institute of Medical Sciences, New Delhi as a student in 1972 and went on to serve on the faculty of the Department of Pediatrics from 1985 to 2020. He became head of the department in 2008. The Government of India appointed Professor Paul as a member of Niti Aayog in August 2017. At Niti Aayog, he leads the health, nutrition, and education verticals. Professor Paul has played a pivotal role in the formulation of key initiatives of the government, including Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Ayushman Bharat Health and Wellness Center Program, the Poshan Abhiyan, and the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission. Professor Paul also served as the chairman of the Board of Governors in super session of the Medical Council of India in 2018 and 20. This tenure was recognized for a record increase in undergraduate and postgraduate medical seats. The introduction of telemedicine guidelines, the district residency scheme, and a number of other reforms were done during this period. Professor Paul has been a part of the Union government's core team for COVID-19 pandemic response, and he chaired the National Task Force on COVID-19, the Empowered Group on Medical Emergency Management Plan, the Empowered Group on Vaccination, as well as the National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19, NECVAC. Professor Paul is a fellow of the National Academy of Medical Sciences, as well as the 3 National Science Academies of the country. He was conferred the prestigious Ehsan Dogra Masi Family Health Foundation Prize by the World Health Organization at the 2018 World Health Assembly in recognition of his global contribution to family health. Well, above all, personally, as a fellow faculty, my 40 years of association with him, I have found Professor Paul as an astute clinician, down to the wire, down to the minutest details. Being a neonatologist, we were doing neonatal surgery, and we had any problem, he used to come and spend many minutes, half an hour to 1 hour on each baby to find out exactly what the problem is. And he never failed. Our babies lived. A thorough gentleman and a nationalist to the core. Sir, the Institute is very proud of you. Welcome.
Go on. Presentation. I need let me take. Okay. Dhanyavad. Namaste. Good morning. Honorable Union Minister of State, Health and Family Welfare, Professor SPS Bagelji, Director AIIMS, respected Dr. M. Srinivasji, Dean, respected Dr. Meenu Vajpayee, Registrar Dr. Girija Rath, Dean Research, Dean Examinations, my teachers in the audience, dear faculty colleagues of the Institute, nursing colleagues, members of the staff, dear students, dear residents, and above all, dear schools, children who have been specially invited to the occasion. Good morning. I'm truly and deeply honored to deliver the Diamond Jubilee oration at today's 68th Institute Day of my beloved alma mater and my Karma Bhumi. The biggest blessing in my life has been to be nurtured as a student and as a professional by this great temple of learning, temple of science, temple of values, and temple of service. Thank you so very much, Director Sir and the faculty, for giving me this honor to be here and to be able to share some wonderful thoughts on a great journey that our nation took very recently. I've chosen to speak on India's COVID-19 vaccination journey, and it is a story, it is a journey of Atmavishwas and Atmanirbharta. Today, I also reflect on many fond memories of the previous Institute days, almost 40 of them. I never miss an Institute day to be a part, ever since 1972 when I joined the Institute. The Institute Day, the Founders Day, used to be celebrated in the Gents Hostel Quadrangle till we built this wonderful auditorium. I had the opportunity to lead one particular Institute Day on behalf of the students of the Institute at that time. The Institute days to me have been days of rejoice and introspection, of celebration and pride, and of resolve and nostalgia. And as I stand here today, all these emotions are overwhelming me. Thank you so much for this unique opportunity and experience. Thank you. I take this opportunity to compliment fused steadfastness, great underpinnings of science and human endeavor. I salute you all. Our teams worked selflessly, sir. They worked 24/7, and our teams here and our family risked their own lives when we had no tools such as the vaccine that I'll talk about, particularly in the year 2020. And at the same time, we continue to teach the students and we continue to pursue research relentlessly, simultaneously. And most humbly and with deep sorrow, I pay my heartfelt tribute to the members of AIIMS team, AIIMS family, our family, who lost their lives during this pandemic, serving the nation. I salute to the AIIMS Corona martyrs.
Sir, as I said, the story of India's vaccination journey is a story of Atmanirbharta and Atmavishwas. I will make a case today how this Atmanirbharta was achieved. What went behind this from the opportunity that I had to watch these developments as an insider. Sir, it's also a story of Atmavishwas, confidence. ये देश करके दिखाएगा, हम कर सकते हैं, हम किसी से डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है. This self-confidence also permeates through this journey and through this story. And this confidence was imparted to us by none other than our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. So here is the journey, here is the story. This is 11th of March 2020. I take you back to 11th March 2020. This is a micrograph of the virus that was first seen by an Indian scientist or a group of Indian scientists in Pune. And the scientist leader, the leader of the scientists, he thought it's a pretty virus. Pretty because of these beautiful corona structure, the spikes that stood out from the wheel or the circle within. But also remember, this must be the day, as we look back, when all the scientists, including those who are in this room, must have thought of vaccine बनाएंगे. It's the immediate trigger. हम बना सकते हैं, ये शुरुआत है. So the thoughts of creating Indian vaccines at least goes back to 11th March 2020, like other scientists in the world. I take you again to the earliest phase of the pandemic. This is the timeline of March and April 2020. The first case was detected on 30th of January, a medical student, a coincidence, from Wuhan. And we already had taken measures of tackling the flights coming from a particular region. And more screening was happening around 4th of March. This is a day when the virus was isolated and reported from Indian laboratory. And this is also the day when WHO declared this outbreak as a global pandemic. A very notable day, 11th March. Events unfolded. Janta curfew happened on 22nd of March. And we had a countrywide lockdown on 25th of March, announcement being made on the 24th of March. I want you to go back to this day. As I said, all the scientific communities, organizations, scientific leaders, industry, were already thinking about how to move forward in their own minds, in their own units, divisions, labs. But then on this particular day, we all came together. 18th March 2020, cumulative cases only 147 as of that day, 21 deaths, last 24-hour deaths only 4, and virus, remember, isolated 1 week back. I had the privilege, humble privilege of organizing a meeting, an first interministerial consultation in this particular room under the shadow of the father of the nation to discuss our response to develop novel therapeutic modalities, affordable diagnostics, and effective vaccine. We all had to come together to do all this. And this, it follows the principle of a whole of comment approach that will be a recurring theme in my talk today. The next day, the principal scientific advisor, Dr. Vijay Raghavan, immediately set up a group which comprised of those of us who attended the first meeting and several more as a special committee for mounting effective, rapid, far-reaching, quick, mission mode scientific and technology journey and response to fight the pandemic. It has the agenda of vaccine, drugs, IT tools, diagnostics, and ventilators. Mind you, till this time only 4 deaths had occurred. 166 cases. The pandemic was rising, but limited. And it had all the players from across
the sectors, and this group was then reaching out on a daily basis to scientists, to industry, to academia, and to the IT might of the country. 14th of April 2020, Honorable Prime Minister gave the following call. I quote, I appeal to all scientists and researchers to work in the direction of making vaccines and drugs for coronavirus. While India has limited resources today, I have a special request for India's young scientists. They should come forward and take a lead in developing a vaccine for coronavirus for the welfare of the world. पहले उन्होंने world कहा. And for the welfare of the human race, unquote. India was making vaccines, not only for India, but for the world. And this is the call the Prime Minister gave to all of us, all of you. The same day, a formal structure was created to pursue this relentlessly till we reach the goal. This was a task force on focused research on corona vaccine and other S&T solutions. And this was the continuation of this committee that I referred, and this got down to business, already in business. But now we had a clear mandate to go. This team had a clear mandate to go. And one major output that came out of the deliberations of this interministerial group, in a way, whole of government, was Mission COVID Suraksha. Mission COVID Suraksha was a game changer. What did the Mission COVID Suraksha encompass? The goal was develop 5 to 6 COVID-19 vaccine candidates for licensure. Very clear. Clear goal. How much money is being put on the table by the Cabinet of India? 900 crore. Ultimately, the nation spent about 775 crore, steered by the Department of Biotechnology, which has the mandate of research on vaccines. And the Mission COVID Suraksha encompassed a direct grant of money to firms to create vaccine. बात होती थी कि अमेरिका ने पैसे दिए, हमने दिए कि नहीं, तो आज डिस्पेल हो जाए ये बात. ये सब काम यहाँ भी हुआ है, जो भी होना चाहिए था वो हुआ. Facilities for animal challenge studies, immunoassays, clinical trial sites were strengthened and created and energized. Capabilities such as cell development, facility augmentation for vaccine manufacturing started to happen under this mission. This mission was so very important, and this was the systematic government response to create vaccine and more. Simultaneously, a few days later, another report was developed, May 2020, and this report clearly showed the pathway, early pathway for vaccine development. By the way, this is also the report which visualized what later on became INSACOG, the Genomic Sequencing Surveillance Network of 52 national laboratories and organizations in the country. So the blueprint was being thought, feverish work was being done by scientists and by the ministries, by everybody concerned. Here, let me now pause for a moment and look at where our industry, vaccine industry, was at this point of time. 19 companies have been producing vaccines in our nation, 24 manufacturing establishments, 7 of them have WHO pre-qualification, and it is a business of 1.95 billion US dollars. More than 60% of the vaccines supplied to emerging and developing countries through UNICEF are provided by our conglomerate of vaccine industry. 1/4 of the global manufacturing capacity, more than 30 vaccines are already being produced on the soil of India, going to 140 plus countries and having a portfolio of more than 1.5 billion doses. And also, this industry was successful in making new vaccines, not just the old, which somebody else did. Japanese encephalitis, typhoid, malaria, and above all, the rotavirus vaccine, which, as you know, was developed at the All India Institute of Medical Sciences, 3rd floor, Department of Pediatrics, which I'm so proud of, by Dr. Bhan. This was, sir, given to Bharat Biotech. यहाँ बना, बहुत डेवलपमेंट चलती रही, और इसको भारत बायोटेक ने दुनिया में सब जा रहा है, और आज हर बच्चे को ये 3 डोज दी जाती हैं जो नया पैदा होता है. So this is the base that we started with. I wanted to see this later, but let me say it now. We can't become heroes from zero.
पहले बेस है तो ऊपर जाएंगे, ये याद रखना होगा। और इस बेस को ऐसे कैसे ले जाए, ये आज की चर्चा आप सबके मन में होनी चाहिए। Covaxin, I'll go quickly, vaccine by vaccine. Covaxin. Before I talk about the journey of Covaxin, I pay my tribute to the Indian Council of Medical Research, in particular, including the National Institute of Virology, Pune. They saw the virus, they processed the virus, and they ensured the early development, the animal studies in particular, of the virus. These were all being done in the maximum containment laboratory of NIV. The virus was being given, live virus was being given by the scientists through endoscopes into the lung of the monkeys. And then dissections would take place. Remember, there was no protection except the gear that you wear. So my tribute to the leadership of AIIMS, the scientists of AIIMS, and I compliment in particular Dr. Balram Bhargav for his leadership. Our own Dr. Balram Bhargav. So, sir, this is an indigenous, end-to-end indigenous vaccine. Virus was provided by AIIMS on 30th of April 2020. Remember this date. It is an attenuated virus, virion vaccine manufactured mostly in Hyderabad plant. And what I want to compliment and let you know is that in the thick of a raging pandemic, no protection, full-fledged clinical trial was conducted across the nation on 24,000 subjects. ये करके दिखाया प्रोटोकॉल के हिसाब से। एम्स ने भी पार्ट लिया, एक यूनिट यहाँ भी था, कोई शॉर्टकट नहीं है। Primate challenge studies, as I said, and other assays were done at AIIMS Pune. Also, THSTI provided, the DBT THSTI system provided other technical support, and compliments to Dr. Pramod Garg for his leadership, another one of us distinguished colleagues. Emergency use authorization was given on 3rd of January 2021, less than 9 months, within less than 9 months of transfer of the vaccine. And of course, WHO provided the emergency use licensing on November 3, 2021. I also want to tell you that a small part of the portfolio was also done by another company, a PSU under Ministry of Agriculture called Indian Immunological Limited in Hyderabad. They produced 2.25 crore doses by tech transfer, something that you may not know, but they rose to the occasion and they were partly funded by the DBT through the mission. We are honored that the Honorable Prime Minister decided to take this vaccine in this institute, both the doses and also this vaccine he gave to his late mother as well. That is the faith that we all had in this vaccine. Covishield. It's an Oxford AstraZeneca UK vaccine, adenovectoral platform, tech transfer to Serum Institute of India, huge manufacturing in their Pune plant, and they also conducted the bridging trial that was needed, and emergency use authorization happened simultaneously with Covaxin on 3rd of June. This is the vaccine which became our mainstay vaccine, brought from abroad, but manufactured on scale on Indian soil. So, as I said, Jan 3, 2021 was special. 2 vaccines, 2 made in India vaccine, 1 end-to-end developed vaccine was licensed for use on that date. By the way, this was only 2 or 3 weeks away from the great vaccines of the world. You hear a lot of talk about them. 11th of December, just about 3 weeks earlier, Pfizer was licensed in USA. Moderna was last licensed on 18th of December, just about 2 weeks earlier. And on 30th of December, the Oxford AstraZeneca vaccine was launched. We were there. We were there on time. We were there ahead of other nations. And that is a story I'm trying to unfold for you today. Come to third vaccine, end-to-end developed in India. DNA vaccine, 3 doses intradermal. Trial conducted again because it's a unique, this is Indian vaccine. First DNA human vaccine. 28,000 subjects in the course of the thick of pandemics, risking lives. DBT gave for this particular vaccine 107 crores. Assays and animal studies and trials were done
using the DVT system and sites. Next vaccine, Corbevax, the biological E protein subunit vaccine, the immunogen developed in the USA, huge manufacturing in Hyderabad, comparator trial was done in India, DBT provided support from the COVID Suraksha mission for 112 crore, assays were done in DBT labs, and the government of India also unprecedentedly provided advance payment of 1,500 crore to buy a very rare CPG, which is the adjuvant, for 30 crore doses. Another vaccine, another great story, the India's mRNA vaccine, which is thermostable at refrigerator temperature, not minus 70, and also in its current form, intradermal, not intramuscular formulation. Again, a long journey of this mRNA vaccine was given the authorization in 2022. DBT, the government of India, that is, provided a grant to develop this vaccine. And today you have an Omicron-specific mRNA vaccine of India, should we need it. It's there in our arsenal. I also want to briefly tell you about Sputnik vaccine, which is a Russian vaccine. It was developed in Russia, and the request came, could they manufacture on scale in India? And yes, we worked systematically to make that happen. The government catalyzed creating a consortium of 6 firms, and we were able to produce this vaccine. Later, we did not need, but it proved that others who want to create and develop and manufacture large number of vaccines, we are available given our capacity. And uniquely, last of all, we also have an intranasal vaccine, which is an adenovectoral platform, and it's now available in the form of drops to be inserted into the nose for protection of coronavirus. I want to highlight here what the government did to support this. Actual money transfer, actual tech transfer for Covaxin. These are animal assays for practically all the vaccines. Then these are the clinical trial sites that have been developed under National Biopharma Mission that were used for the purpose of vaccine. So it's a collaboration of scientists, the government institutions, the private sector, and more to make possible a plethora of vaccines. NEGVAC, or National Expert Group on Vaccine Implementation. Even when we were preparing, India was working to develop vaccines, and nobody knew whether the vaccines would work. So you're working on 7 vaccines, but nobody knew these would work. And at the same time, an organized effort was being made by the government to prepare a strategy. One day when we have the vaccines, how will the vaccine become vaccination? And that process started on 7th of August, 2020, to prepare a strategy, to develop a digital infrastructure, to prioritize populations when the vaccines start trickling in and more, delivery system, community action, and looking at how to disseminate information, how to engage people. So this was the mandate of this particular group, which apart from the union government functionaries had state governments and a few experts. And we created a blueprint as to how vaccines have to administer, including how a COVID vaccine center would look like. ये 2 लोग यहाँ होंगे, फिर हम यहाँ बैठेंगे, ये एक चीज़ यहाँ होगी, SOPs, detailed SOPs were done for this purpose. India has a National Advisory Group on Immunization, a standing committee which gives a decision when to institute a particular vaccine into the public health system. Regulatory facilitation happened in multiple ways. We gave fast-track approval to foreign-made vaccine, which we did not need, but we did it when it was needed. We had specially constituted subject committees, which held more than 200 meetings, sometimes going into 3 o'clock in the morning.
and several of you may have taken part in these meetings, we created additional capacity for batch testing because we were saying suddenly there will be more than 1 billion doses being developed. And we only had one lab in Kasoli for batch testing, and this was multiplied to 3. The fourth one, we had the plans, but we did not need. Other regulatory facilitatory decisions were also taken. The Honorable Prime Minister, to give boost to the teams and to reassure the nation and to encourage all of us, visited 3 vaccine manufacturing sites on 28th of November 2020. This is the report card. Before I move to my next segment briefly. This is the report card of India's COVID-19 vaccines. This is our vaccine wallet as of today. 8 vaccines, all platforms. 5 to 6 billion dose capacity per annum. Price less than $3. We have 3 of these vaccines which are end-to-end Indian. We have all the platforms, as I said, and we have 3 of them approved also by WHO. We are so proud that you have this arsenal today. And this is the achievement of science and industry and people together. In doing so, vaccines for children are available and heterologous boosters are available should we need them anytime. And in the meanwhile, as we went along on this journey, the records were created. First DNA vaccine, needle-free. First thermostable intradermal mRNA vaccine, and the first intranasal vaccine happened as India took this journey of science and industry. Moving from vaccines to vaccination, quickly. We have the vaccines. How did we take to the people? Well, we had strong pillars in this regard. Above all, experience. Every year, 90 lakh vaccine sessions are held for children and mothers across our nation. So what is the big deal? We will do it. 65 crore doses of vaccines are procured and put into the system through to 29,000 vaccine storage points using an electronic system called eWIN. CoWIN came later, but eWIN was already active. But to prepare for vaccination effort, 2.6 lakh vaccinators and 4.8 lakh other people were trained in this endeavor, and a comprehensive communication strategy was built. The adverse effect paradigm was activated to monitor the adverse effects of vaccines. A governance structure emanating from the center, NEGVAC, state level, district level, and block level was undertaken. A unique and very impressive, highly impressive, glamorous CoWIN system was put in place, which, as you know, would give registration, schedule your appointments, and give you an electronic certificate at the end of it. All these building blocks happened in a matter of days and weeks. Prioritization of COVID-19 vaccination was important because suddenly there are not going to be 2 billion doses falling from the sky. Someday there will be 20 million, someday 100 million, and so on. So it was scientifically ascertained after discussions, deep thinking, how to start small and then how to build up. And obviously, starting with healthcare workers was the first priority, followed by frontline workers, and so on, all the way to including everybody above the age of 12 years. The Honorable Prime Minister launched Pan-India rollout of COVID-19 vaccination drive on 16th of January 2023. Vaccines were already moving from manufacturers by air to government store depots, big depots, and state stores, moving in refrigerated vans to district vaccine stores and on to primary health centers. And from there, the vaccines moved on the boat, on foot, on motorcycle, on drones, on camels, on backpacks, into the homes, and into office and school locations, and so on and so forth. And that's how in every household, every nook and corner, every hamlet, the vaccines reached and were administered. Salute to the
entire public health teams, including our great grassroots worker, the Ashas and Anganwadis. This is a snapshot from COVID, and we started slowly. These are the total doses every week, each dot. And you can see it started slow, it started to pick up, it started to pick up, it picked up, and on a particular day, average 7 crore doses per week were being given. And then as we saturated, the speed slowed. This is the imprint of the action of vaccination in the country. In this journey, from appointments to, we moved very quickly to walk in, come and take the vaccine. At a peak, more than 1 lakh centers were active. We learned to manage vaccine wastage. Every drop was used. There was a lot of wastage in the beginning, which was taken care of by the teams. We learned to communicate both to excite eagerness and to combat and to address very humbly the hesitancy. India came on board. Everybody accepted the vaccine. We reached workplaces, near homes, in homes. We reached jails, prisons, destitutes, orphanages together. India reached everywhere. More than 1 crore doses were administered on 10 days each, and on one particular day, more than 2.5 crore doses were administered. We picked up speed. These are other nations. This is Europe, European Union, this one. This is USA, red one. This is South America. And this is India. We started slowly. As we picked up, we went higher than every other nation as the speed picked up. And we were on top of the administration of the vaccine. The speed and the scale is visible here. One particular day, we overtook USA in COVID-19 vaccination. It was a day of celebration and confidence and resolve. One particular day, we had completed as a nation 1 billion doses having been administered. On another day later on, 2022, 2 billion doses have been given. And let me say the most important thing, sir, aapke attention ke liye, sir. Sir, 98% of the doses administered were through the public health system. Free through public health system. The private sector rose to the occasion, but they administered only 2% of the doses. It is the strength of the public health system and investment in the public health system which made this success possible. Everybody knows now, I don't have to say it, near almost 100% coverage of our vaccines. The coverage based on location, rural location, 71%. That's the population of rural India. Perfect. People were saying, gaon mein kaise jaoge? By gender, perfect. Everybody got the vaccine. And then which vaccine? Just to let you know, in the scientific gathering, ultimately, about 80% of the vaccines were Covishield. This is Covishield. And 17%, 16.5% were Covaxin. And Corbevax is 3.9%. That's the overall information which you may like to keep in mind. Adverse effects, almost nil. Safe vaccines. A lot of questions were asked. Safe vaccine. And this is the story of Atmanirbharta, sir. Vaccine bhi Bharatiya, syringes bhi Bharatiya, needles are Indian, gloves are Indian, vaccinators are Indians, and IT platform is Indian. This is the full scorecard and the report card on Atmanirbharta. Not many nations can boast of this. Very few, very few. I now move lastly to a very brief theme of how we serve the world. On 26th of September 2026, almost 3 years exact, at the 75th UN General Assembly, the Honorable Prime Minister said the following, I quote, "Even during these very difficult times of a raging pandemic, the pharma industry of India has sent essential medicines to more than 150 countries. Already we had done that. As the largest vaccine-producing country of the world, I want to give one more assurance to the global community today. India's vaccine production and delivery capacity will be used to help all humanity in fighting this crisis," unquote. This is 26th of September. Nobody knew that we will be succeeding in getting effective vaccines. 26th of September is still far away from 3rd of January.
वो एश्योर करते हैं कि दुनिया के लिए हम काम ये कर रहे हैं. This is the spirit with which this nation worked. And then out of that intent and guidance came Vaccine Maitri. 16th of January, India started vaccination program. By 31st of January, already the vaccines were shared in these quantities with nations in our neighborhood and some special nations in the thick of the pandemic. This is the first phase of Vaccine Maitri. Ultimately, India's 29 crore vaccine doses reached all the continents in 101 countries. That's India's achievement as well, even as India imparted more than 2.2 billion doses to its own citizens. What is the price? Our price was typically 1/7 of the price of the vaccines which the world made. $20, even $40, by the way. Pfizer. Moderna was $18. Price of our vaccines were about less than $3, between $2 to $3. Now, imagine, if we had to bring all these vaccines, 2 billion doses, to be bought, and these are the vaccines to be bought from, it would have meant more than 1% of GDP to be spent. And we spent 30,000 crore, less than 30,000 crore, 1/7 the cost. अब एक बात है कि ये तो इंडिया अफोर्ड कर सकता है, नॉट एन इशू, करना पड़ता तो करते ही, लेकिन है कहाँ? The total export in the first year of vaccine was 2.2 billion doses. We had already administered from our own sources 1.6 billion doses. अब किसके पास है 2 billion dose देने का? था ही नहीं. That should be known to all of us. If we hadn't made our own vaccines, it was a catastrophe because vaccines were simply not available. The total vaccine offer we ultimately had got from other people was less than 13 crore. Only less than 13 crore. और यहाँ 150 किलोमीटर NCR 100 किलोमीटर तक भी पूरा नहीं पड़ता. So we had to do it for us, and India did it. You all did it. The nation did it. Vaccine efficacy. This is ICMR vaccine tracker. Tells us that effectiveness of 1 dose in preventing death is 99%. 2 doses, a little more. You don't need, it's almost 100%. And the vaccine impact in terms of lives saved from an independent study published in the Lancet for the World shows us that India's vaccination program in the first year saved 34.2 lakh lives. 3.4 million lives were saved because of India's vaccination program in the first year. That's what you all did. We all did. Indians did it. And last but not the least, an economic impact of 18.3 billion US dollars, which is 129,000 crore, is estimated by a team at Stanford in terms of what it meant in terms of productivity. Friends, to conclude, let me talk about enablers of the story of Atmanirbharta and Atmavishwas. First and foremost, strong, decisive, and supporting leadership of the Honorable Prime Minister, who gave free hand and full support and guidance and encouragement and motivation to the scientific community, to enablers in the government, people like us, to the industry, and people at large, that go ahead, bring solution from Indian soil. And he reached out to chief ministers repeatedly, one of those meetings, virtual meetings, to take everybody along in this difficult and at times very uncertain journey. Well, government, academia, industry, and people worked as one team India. That's how it has become possible. One team India. Integrated stewardship, the teams that I was referring to, the systems that I was referring to, some of those, they delivered systematically because we worked together as a team, as an intergovernment system. Strong scientific and industrial and regulatory base. As I said, you can't become hero from zero. We had a huge UIP experience and robust grassroots network of our public health system. Above all, it's a story of whole of government approach. This is actually the story of how pandemic strategy rolled out and unfolded, and it likewise applies to the story of vaccination.
whole of government approach, and I hope I made that case, whole of nation approach because everybody embraced, state governments came together, whole of society approach because all had a pride, Indians had a pride of this achievement, and we embraced the vaccine. And indeed, it was driven by science and technology. We are better prepared for future for sure. More pandemics will happen, health emergencies will happen, it's only a matter of time. Our R&D and manufacturing capability must retain global leadership moving forward. Next time around, the vaccines will have to be developed not in 9 months, but 100 days. That's the way the international community expects, and we have to do that in 90 days or less to be in the league. Our capability is truly available not only for our own country, but for the world. And for this, last of all, let me plead, let's make more science cutting edge, world class, relevant, strategic, focused, interdisciplinary. And here, we all have a role. And someday, let's talk how for future pandemics, what role our laboratories, our scientists, our epidemiologists will play. That's a topic for another day, Director Sir. And let's also nurture the pharma, vaccine, and medtech industry. This together, we will create countermeasures for future health emergencies. Countermeasures means drugs, diagnostics, and vaccines, and IT solutions. With these words, I profoundly thank you for the opportunity, for the time that you gave, and your listening that you imparted. Thank you very much. Jai Hind. Thank you very much. Thank you, sir. It's always a pleasure to listen to Professor V.K. Paul, and always something new to learn. And today he showed how an academic oration can be brilliant as well as exciting. Thank you, sir. And now I would request our chief guest, director and dean to present the certificate and memento of the Diamond Jubilee oration. Thank you very much. I request the dignitaries to stay on the stage because we'll have now the distribution of awards for a lot of our achievers for the last year. I request the academic section to facilitate. So the first award for this morning is Dr. B.K. Anand Medal 2022 for the best postgraduate student in physiology, and that is awarded to Harshita Mangla. Dr. Bodhraj Sabharwal Medal 2022 for the best postgraduate in ophthalmology is awarded to Ananya Jayanand.
The Sanjeevani Medal 2022 for the best postgraduate student in anesthesiology is awarded to Kavita Girish. Dr. Atam Prakash Medal 2022 for the best MBBS intern in surgery is awarded to Nishita Purohit. Dr. Shyam Sharma Medal 2022 for the best postgraduate student in radiology is awarded to Mohak Narang. Dr. Jagdish Lal Kapila Medal 2022 for the best DM student in cardiology is awarded to Vibhav Sharma. The next award is shared. Srimati Shakuntala Jolly Medal to the best DM medical oncology student is shared between Sindhura Durga and Shurdeep Ganguly. Dr. V. Ramalinga Swamy Medal 2022 for the best junior resident in pathology is awarded to Sachita Pandey. Srimati Kirpal Kaur Medal 2022 for the best house physician is awarded to Sanjana Malakar. Colonel G.C. Tandon Medal for the best senior resident in anesthesiology is awarded to Amal Mandal. Professor Hingorani Medal 2022 for the best clinical resident in obstetrics and gynecology is awarded to Shivangi Mangal. Dr. S.S. Sidhu Medal in dental surgery in 2021 is awarded for the best postgraduate student, and this year it is Dr. Shanmuga Sundaram D. The same award, Dr. S.S. Sidhu Medal 2022 for dental surgery for the best postgraduate student is awarded to Garima Khandelwal. The Hira Lal Medal 2022 for surgery for the best postgraduate student is awarded to Hema Sirikotu. Dr. J.R. Chawla Medal 2022 for urology for the best senior resident in urology is awarded to Manish Khattar. Dr. M. Rohtgi Medal 2022 for the best MCA student in pediatric surgery is awarded to Mehak Sehgal. The Dr. O.P. Ghai Medal for the best senior resident in the Department of Pediatrics is awarded to Dr. Anshula Tayal and Dr. Srinivasa Varadan, but he's not available today. So it's a shared prize. The Geeta Mittal Medal and Book Prize 2022 for the basic research is awarded to Shalini Suman. She's not there. Sri Mohanlal Wig Medal 2022 for clinical research is awarded to Sharan Tangaraj. He's also awarded the Sorel Catherine Freeman Book Prize
in pediatrics for the best postgraduate student, along with S.M. Mohana Sundaram. So the book prize is shared between Sharan Tangaraj and S.M. Mohana Sundaram. Professor V. Ramalingaswamy Book Prize 2022 for the Best Medical Intern at the Rural Health Center Ballabgarh is awarded to Ayushi Sachan. Dr. MMS Ahuja Book Prize for the Best DM Student in Endocrinology is awarded to Manish Kumar Thakur. The Srimati Leelavati Salvan Book Prize 2022 in Obstetrics and Gynecology for the Best Junior Resident for Outstanding Research is awarded to Aryan Kashyap. The next award is for the Best DM Neurology Student, the Manohar Lal Soni Book Prize. It's awarded to Dr. Saman Fatima, but she is unavailable. And so Professor Rohit Bhatia will be receiving it on her behalf. Dr. Rakesh Tandon Book Prize 2022 to the Best DM Gastroenterology Student is awarded to Vaishnav Manas Bhadresh Bhai. The Kamini Charity Trust Book Prize 2022 for otolaryngology for the best MS ENT student is awarded to Mayank Dilip. The Amazonians of America Book Prize Award 2022 for the best nurse is awarded to Meera Kar. The Amazonians of America Book Prize Award 2022 for the best nurse in research work is awarded to Satonshi Kumari. The Amazonians of America Book Prize Award 2022 for the best nurse in community care nursing is awarded to Matthew Varghese V. Now, you all are aware that there is an exhibition of posters that has been put up outside, and there are awards for the best posters. So the best poster presentation, the consolation prize, is awarded to PMR, that is Physical Medicine and Rehabilitation. Congratulations. The next is the third prize for the best poster presentation that is awarded to NDDTC and the Department of Psychiatry. Is anyone from the Department of Psychiatry available? Congratulations, sir. The second prize for the poster presentation is awarded to the College of Nursing.
Congratulations. And the best poster goes to the Department of Surgical Disciplines. Congratulations to all the winners. In addition, as you know, that the CMET makes a signal contribution, a remarkable contribution to the setting up of the exhibition. And as a token of our appreciation, we would like to felicitate them to a congratulatory certificate to CMET. And I request 3 people to come forward. Mr. Yogesh Kumar, Mr. Rajesh, and Ms. Sheeja. Thank you. And congratulations again to all the awardees. Now we'll have the address by our chief guest. We have the honor and the privilege of having among us Professor S.P. Singh Baghel, who is the Honorable Minister of State for Health and Family Welfare of the Government of India. Sir, please. देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था एम्स के 68वें स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे नीति आयोग के सदस्य और एम्स से जिनका वर्षों पुराना रिश्ता है, ऐसे अति सम्मानित डॉक्टर वी.के. पॉल साहब, एम्स के यशस्वी डायरेक्टर श्रीनिवास जी, एम्स के हमारे टीम वाजपेयी जी, रजिस्ट्रार जी, रथ जी, झज्जर को देखने वाले आलोक ठक्कर साहब, विभिन्न फैकल्टीज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इस संस्था से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं, देवी एवं सज्जनों, मेरा अपना सौभाग्य है कि एम्स के 68वें स्थापना दिवस पर मुझे आने का मौका मिला। प्रदर्शनी के माध्यम से फाउंडेशन स्टोन से लेकर के आज तक एम्स क्या कर रहा है उसको थोड़ा देखने का मौका मिला। अभी यहीं पर 4 पीढ़ियों से परिचय हुआ। पॉल साहब को जिन्होंने पढ़ाया या पॉल साहब ने जिनको पढ़ाया और अब जो पढ़ रहे हैं, 3 पीढ़ी तो यहीं बैठी हुई हैं डाइस पर।
और तीनों पीडियाट्रिक्स के हैं, इसलिए अवार्ड भी पीडियाट्रिक्स को ज्यादा मिले हैं। कोई ना कोई वाद हमेशा रहता है, जातवाद, क्षेत्रवाद, विभागवाद। सारे अवार्डीज को बहुत बहुत बधाई। कई पीढ़ी खपी हैं, अपने जवानी के बेहतरीन दिन दिए हैं उसको, तब जाकर के एम्स इस प्रतिष्ठा को पा पाया है। मैं गारंटी के साथ एक बात कहता हूं कि इस देश में यदि कोई बच्चा 10 साल का है, निरक्षर भी हो सकता है, लेकिन एम्स का नाम उसने सुना है, वो एम्स को जानता है। एम्स का एब्रिविएशन हो सकता ना बता पाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लेकिन वो एम्स उसने सुना है। ये क्यों सुना है? इस 68 साल में आपने, मुझे लगता है, कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन देश के हर रेवेन्यू विलेज के किसी न किसी मरीज को आपके आते ही लास्ट स्टेज में मरणासन व्यक्ति को ठीक करके जिंदा वापस आपने उसके गांव भेजा है। और जब उससे मिलने उसके रिश्तेदार आए होंगे, ये गांव में बड़ा शिष्टाचार है, जब कोई अस्पताल से ठीक होके आता है तो उसको देखने आते हैं, तो उसने आपका यशोगान किया होगा, भैया मैं तो मर ही गया होता यदि एम्स ने न बचाया होता। इसलिए इस 68 साल में आपकी प्रसिद्धि जो हुई है, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बताते हैं। एक ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन को बताता, मैं फलाने सन में बहुत बीमार हुआ था, मैं एम्स चला गया तो फिर ठीक हुआ। तो इसको कहते हैं माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट। बस नई पीढ़ी पर यह जिम्मेदारी है कि जो उनके पुरखों ने बहुत मेहनत करके, बहुत ईमानदारी से, बहुत कर्मठता से, बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत रिसर्च करके जो एम्स को ये प्रतिष्ठा दिलाई है, उसको आने वाली पीढ़ी मेंटेन करके रखें तो भी बहुत बड़ा इस संस्था पर उनका एहसान होगा। मैं तो उस सोच के लिए भी सरस्वती जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। विचार वही देती हैं कि नीति निर्धारकों के जेहन में वो पल कब आया था जब उन्होंने एम्स की परिकल्पना की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं राजकुमारी अमृत कौर जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा। उन्होंने दुनिया का दौरा किया, तमाम लोगों के इंटरव्यूज लिए, छांटा, पहले डायरेक्टर को चुना और जो उनकी सपनों की एम्स थी उसको एस्टेब्लिश किया। मैं तो न्यूजीलैंड का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उस जमाने में उन्होंने हम गरीब भारत को, मैं डेवलपिंग भी नहीं कहता 56 में, हम अनडेवलप्ड थे, सुई हुई भी नहीं बना पा रहे थे, एक आर्थिक मदद की। खानदानी व्यक्ति वो होना चाहिए जो एहसान और अपमान दोनों याद रखे। तो मैं इस विभाग से जुड़ा होने के कारण उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने उस जमाने में, जब दोपहर भोजन भी नहीं उपलब्ध था, जितनी आबादी थी उतने मीटर कपड़ा नहीं था हमारे पास, लाल बहादुर शास्त्री जी को अनुरोध करना पड़ा कि हम दोनों टाइम भोजन नहीं खिला पाएंगे, व्रत रखें। मेरे पिताजी ने बताया कि वो व्रत बहुत प्रसिद्ध हुआ शास्त्री सोमवार के रूप में, कि जब रखना है तो मंडे के दिन रखें। PL 480 का समझौता हुआ, मैक्सिकन गेहूं आया जो समुद्र में फेंका जाता था, वो उसको लेने के लिए हम पांव पखाड़े बिछाए हुए थे। मैं 67-68
का साल नहीं भूल सकता जब वो मैक्सिकन गेहूं की रोटी खानी पड़ी। ऐसा लगता था इलास्टिक की तरह वो आटा बढ़ता था। उस जमाने में जो के 68 या 555 या RR 21 की रोटी खाता था वो बड़ा आदमी माना जाता था। दिल्ली आके पता चला कि जो हम खाते थे उसे यहाँ पर मिलेट्स कहते हैं। समय का चक्र बहुत घूमता है। सुनते हैं घूरे के भी दिन 12 साल बाद फिरते हैं, तो बाजरा और मक्की और ज्वार के भी दिन फिर गए। ये हम गरीबों का, मैं बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं अपने अनुभव ही अपने स्पीच का अंग बनाता हूँ। 32 घरों का मेरा गांव है केवल। उसको हिंदी में मजरा और हेमलेट्स कहते हैं अंग्रेजी में। मुझे जब मैं इस विभाग में नहीं आया था तो एक दिन एम्स आया था, तो डायरेक्टर साहब के PRO साहब ने कहा कि जितने उत्तर प्रदेश के 79 MP रिकमेंडेशन लिखते हैं उतनी आप अकेले लिखते हो, क्या कारण है? तो मैंने कहा थोड़ा जमीन से तो जुड़ गया था 25 साल पहले, आजकल पाताल से जुड़ा हुआ हूं। तो 18 लोकसभा, कल संडे था, मेरे से मिलने आई थी, लोग आए थे। सुबह सो के उठते हैं, कोई काम आए या ना आए, जिसके लिए हम MP चुने गए हैं उसके लिए कोई आए या ना आए, लेकिन मरीज जरूर आता है। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं सफदरजंग में जाके भाषण दूंगा तो भाषण बदल जाएगा। अगर 100 लोग आए हैं, इसमें 27वां साल चल रहा है मुझे MP बने, तो 99 एम्स के लिए आते हैं। मजा तो तब आता है कि कोई जला हुआ केस आता है, मैंने सुना है कि सफदरजंग जले हुए के लिए बेहतर है, तो भी वो एम्स की चिट्ठी लिखाता है। सड़क पार है सफदरजंग, बहुत अच्छा अस्पताल है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये देश में भेड़ चाल चलती है। तो मैं कहता हूं कि भाई बर्न का केस तो सफदरजंग ठीक है। मुझे याद है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गैस का सिलेंडर फटा, मैं UP में मिनिस्टर था, तो मैं घूम रहा था तो मौके पे चला गया, तो पता चला कि फिरोजाबाद के अस्पताल में वो लोग एडमिट हैं। फिरोजाबाद गया तो मैंने CMO से कहा कि एम्बुलेंस बुलाओ, सबको सफदरजंग भेजते हैं। किसी रिश्तेदार, किसी मरीज का रिश्तेदार प्राइमरी का टीचर था, हमसे ज्यादा ज्ञानी था वो, उसने कहा कुछ नहीं, तुम बोल रहे हो, हंस रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक हो जाओगे। जो ज्यादा परसेंटेज बर्न थे वो सफदरजंग ने बचा लिए, जो सबसे कम जला था वो उस अस्पताल में इन्फेक्शन से मर गया। मेरे अपने निजी अनुभव हैं, तो प्रदर्शनी से देखा कि कितना मेहनत आप लोग कर रहे हैं। डॉक्टर पॉल साहब के उद्बोधन में किसी को PhD करने का मन हो, वैक्सीन टू वैक्सीनेशन, तो पूरी सिनॉप्सिस आज बताई गई है। बल्कि मेरे निजी विचार हैं कि मैंने सुना है समुद्र मंथन हुआ था, उसमें विष निकला था, अमृत निकला था, ऐरावत हाथी निकला था, उच्चैसरवा घोड़ा निकला था, पारिजात का वृक्ष निकला था, पता नहीं निकले थे नहीं निकले थे, लेकिन इस शताब्दी का अगर अमृत है तो वो आपकी वैक्सीन है। वो हुआ होगा, मैं सनातन धर्म में बहुत विश्वास रखता हूं, लेकिन ये मेरे सामने हुआ है। वैक्सीन टू वैक्सीनेशन। मैं कमेटी में था जो थोड़ा मॉनिटरिंग करती थी। मुझे बताया गया था कि 8 साल से 12 साल का इतिहास होता है वैक्सीन की उत्पत्ति का, जो आपने कुछ महीनों में किया। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि 3 बार विजिट किए मनोबल बढ़ाने के लिए। मैं खुद कहता हूं कि जब हमारी पीठ पर किसी बड़े आदमी का हाथ होता है तो हिमालय से टकराने का भी मन करता है।
तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा। नेता का मतलब है नेतृत्व करे। अफवाहें बहुत थी। उत्तर प्रदेश के एक पार्टी के बड़े नेता का एक बयान इस शताब्दी का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति का घटिया बयान था, जिन्होंने कहा था ये भाजपाई वैक्सीन है। नहीं बोलना चाहिए, नेतृत्व की नकल होती है। मोदी जी से पहले रंगीन जैकेट नहीं पहनता था कोई, आधा कुर्ता भी नहीं पहनते थे। चंद्रशेखर जी से पहले राजनीति में दाढ़ी नहीं रखी जाती थी। राजीव गांधी ने जिस स्टाइल से शॉल ओढ़ना शुरू किया था, यूथ ने वैसे ही शुरू किया था। वो भी एक दल के नेता थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी फॉलोइंग है, मुख्यमंत्री भी रहे वो। नहीं बयान देना चाहिए था, क्योंकि अंधभक्त लोग नकल करते हैं। मूवमेंट पीछे गया थोड़ा, बाद में खुद ने भी लगवाई और अपने पिताजी को भी लगवाई, लेकिन देरी कर दी बहुत, लोगों को दिग्भ्रमित किया। इसलिए एक दल विशेष के गांव में मैंने सीएमओ से पूछा तो वहां सबसे कम, कुछ जिले हैं जहां उनका प्रभाव था, उन जिलों में कम वैक्सीनेशन हुआ था। मैं तो अपने नर्सेज बहन भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। कहा गया था 2 गज जमीन 2 गज दूरी है जरूरी। आपने सब कुछ बना लिया था, लेकिन 2 गज का इंजेक्शन क्यों नहीं बनाया था, सिरिंज? 2 गज की वो भी बनानी चाहिए थी, 2 गज से लगाई जाए, वो नहीं बनी। बहुत नजदीक आकर के आपने वो इंजेक्शन लगाया, पॉजिटिव लोगों को लगाया। युद्ध के मैदान में शहीद बनने वालों को ही शहीद नहीं कहना चाहिए, बल्कि इतना खतरनाक दुश्मन से आप लड़े हैं, वायरस से। मैं उन सब का चिकित्सक से लेके और झाड़ू लगाने वाले के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपको पता है कि देहात में बहुत बाद में शुरू किया गया। मेरी निजी राय ये थी, जब तक वैक्सीन नहीं बनी थी, कि जिस दिन वैक्सीन बन के आएगी, मुझे लगता है लाठी चार्ज करना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव था, क्योंकि वो वही बचा सकती थी। तो उसके लिए तो मारामारी होगी, डबल लॉकर में रखनी पड़ेगी, लंबी लाइन होगी, भगदड़ मचेगी, हो सकता है लाठी चार्ज करना पड़े। यहाँ मैं जिंदगी में पहली बार फेल हुआ, ऐसा नहीं हुआ, अफवाहों की वजह से, अशिक्षा की वजह से। पहली आगरा की वैक्सीन मैंने लगवाई, इसलिए लगवाई कि नेतृत्व, हाँ वहां कह रहा था नेता की नकल होती है। मैंने पहली लगवाई, बूस्टर भी मैंने पहले लगवाया। लगवाने के बाद फेसबुक पे पोस्ट किया। इसके बाद शाम को मैंने 3 वॉलीबॉल के मैच खेले, वो ये बताने के लिए कि मैं जिंदा हूं। मुझे बुखार भी नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, कुछ संख्या बढ़ी। लेकिन एक दिन मैं अपनी देहात की एक सीएससी पे गया, एतमादपुर, उन दिनों भी जा रहा था, तो मुझे वहां गाड़ी मिली यूपी 14, यूपी 15, यूपी 16, HR, RJ, DL। फिर मुझसे रास्ते में जो लोग मिले वो कपड़े ब्रांडेड पहने थे। मैंने कहा आलू महंगे बहुत हैं हमारे इलाके में इस बार, लेकिन इतना भी नहीं महंगे हुए कि ब्रांडेड लोग कपड़े पहने। फिर उन्होंने मुझसे गुड मॉर्निंग कहा। मैंने कहा हमारे लोग तो गुड मॉर्निंग भी नहीं कहते हमसे। भैया कहाँ से आए हो? गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ। क्यों? वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि आपका जो वो था ऐप, उसमें कहीं भी अलॉट होता था जहाँ खाली था। तो मेरे बेटे को मिला था 120 किलोमीटर दूर पिनहाट, जबकि मैं आगरा का MP था। मैंने कोई तारीफ वो मैनेज नहीं किया कि भैया CMO से कहता है या प्राइवेट, नहीं, जो आपको मिला है वहाँ जाओ। तो वो पिनहाट हमारा आखिरी गांव है आगरा का, 100 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल नहीं प्रशासन को छेड़ा। तो ये जो शिक्षित लोग थे ये वैक्सीनेशन के लिए गए।
और लोकल एतमादपुर कस्बा, जिसकी कस्बे की संख्या 12,000 है, तब तक एक भी कस्बे के आदमी ने 200 मीटर दूर जाके नहीं लगवाई थी। तो ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय हो गया। फिर मैंने ग्राम प्रधानों से अनुरोध किया कि आप अपने गांव के नेता हो, आप लोग शुरुआत करो। बड़ी मुश्किल में वो तैयार हुए। मैंने अपना बताया कि अब तो मुझे लगे हुए 8 दिन हो गए हैं और देखो बिल्कुल ठीक हूँ। यहां तक कहा गया तुमने कोई स्पेशल वाली लगवाई होगी। तो मैंने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी एम्स में आके लगवाई थी, ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी वही लगवाई है जो सबको लग रही है। दूसरी बात, एक बात और थी कि वो शायद एक सीसी में 10 डोज थे ना। जब तक 10 आपको मरीज वो नहीं मिलते थे तब तक आप उसको खोलते ही नहीं थे, क्योंकि वेस्टेज होगी। तो मैं कहता था उसी में से रामलाल को, उसी में से श्यामलाल को, उसी में से हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सब लग रहे हैं पोलियो की तरह कि 2 बूंदे इस बच्चे को, 2 बूंद, जो लाइन में बैठे हैं। तो ये अफवाह उड़ी कि बड़े लोगों की, भाई ये तो बघेल साहब ने लगवाई है, वो अमेरिका से आई है 5 लाख की। तो मैंने फिर सीएमओ से कहा बयान दे भाई, बयान दो कि मैंने वही लगवाई है जो मेरे बाद एक रिक्शा पुलर ने लगवाई है। तो ये सब अशिक्षा के कारण अफवाहें मची। तो जब प्रधानों ने लगवाई तो थोड़ा मूवमेंट गांव में बढ़ा। फिर मैंने कहा प्रधान जी आजकल आपके कुछ भीड़ ज्यादा हो रही है। कह रहा हाँ काफी लोग आ रहे हैं। मैंने कहा वो तुम्हें देखने आ रहे हैं कि तुम जिंदा हो या मरे हो, और तुम्हारे फोड़ा निकला या नहीं निकला, तुम्हें बुखार आया या नहीं आया। नहीं आया है तो जाकर के वो लगवा रहे हैं। कितनी मेहनत से आपने वैक्सीन बनाई, और उसके बाद अशिक्षा और अफवाह ने उस मूवमेंट को, लेकिन फिर दोनों बातें हुई। फिर ये भी हुआ कि एक दिन में 1 करोड़ लोगों ने लगाई। तो मैं समझता हूं कि अगर अलग अलग क्षेत्र में होता है ना कि ये विकसित राष्ट्र है, ये विकासशील है, ये अविकसित है, अगर हेल्थ के मामले में देखा जाए तो हम दुनिया के विकसित राष्ट्रों में आ गए। इसलिए आ गए कि दुनिया में कहीं जाके ऑपरेशन कराना, यहाँ से जाते हैं ना पैसे वाले लोग अमेरिका, यूके, कनाडा, और वहां जाकर क्या करते हैं, वहां चौंकते हैं कि उस टीम में एक डॉक्टर भारत का जरूर होता है। ये हमने उपलब्धि पाई है। तो इतना ही मुझे कहना था। थोड़ा ये और एम्स के बच्चों को कहना चाहूंगा, सामाजिक दायित्व हमेशा याद रखना। 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं भारत की। इंडिया बढ़ता रहा और भारत पीछे रहता रहा। पिछले 60 साल से भारत के लोग सरकार चुनते थे और इंडिया के लोग चलाते थे। 9 साल से ये हुआ कि भारत के लोग सरकार चुन रहे हैं और भारत के लोग ही चला रहे हैं। इसलिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। इसलिए आपसे रिलेटेड आयुष्मान कार्ड आया है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अगर कोई पत्रकार मुझसे पूछे, जिसने पूछा नहीं कभी, कि मेरे 6 कार्यकाल में या आजादी के बाद आप किस स्कीम को नंबर 1 मानते हैं, तो कोई कहेगा अभी अभी चंद्रयान चांद पे गए हैं, कोई सड़क योजना बताएगा, कोई मंगल पे जाने को बताएगा, कोई 5 किलो गेहूं चावल फ्री के बताएगा, कोई इंटरव्यू समाप्त करना। ये सब अच्छे काम है, लेकिन मेरी दृष्टि से अगर आजादी के बाद सबसे पॉपुलर योजना और सबसे लाभ देने वाली है वो आयुष्मान कार्ड है। 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल, पूरे परिवार का इलाज होना, इससे बड़ी कोई योजना हो ही नहीं सकती। और वो मैं सिद्ध करूंगा कि वो क्यों है। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल पिछले 4.5 साल से निःशुल्क पा रहे हैं, और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हमारी सरकार को भी बनवा रहे हैं, स्वीकार करना पड़ेगा। मात्र 20,000 का 12,000 से शुरू हुआ था। शौचालय के लिए आवेदन कर रहे हैं 3.5 करोड़ लोग। जितने में अच्छा वास्तुएशन शहरों में आता है, उतने में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का 1.5 लाख का मकान लेने के लिए रोज सिफारिश करवा रहे हैं। शहर में प्रधानमंत्री शहरी आवास 2.5 लाख के लिए रोज प्रधानों के घर पे आते हैं। किसान सम्मान निधि की 2000 की साल में 30
3 किस्तें आती हैं, वो प्रधानमंत्री जी कब बटन दबाएं, कब डीबीटी के माध्यम से हमारे खाते में 2000 रुपए आए, इसकी प्रतीक्षा करते हैं। मात्र 1000 रुपए विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो तीसरे महीने आती है। एक महिला ने कहा मुझसे कि मोदी जी ने हमारी इज्जत करा दी घर में। मैंने कहा क्या हुआ? बोले पेंशन आने के 3-4 दिन पहले से बहू पैर दबाना शुरू कर देती है, क्योंकि 1000 आने वाले होंगे। तो इन लोगों का भी ध्यान रखना, ये बीमार होने की स्थिति में नहीं इलाज करा पाएंगे। ये मनरेगा के ढेर करोड़ों मजदूर जब जिस दिन बीमार होते हैं उस दिन भी उसका पैसा मारा जाता है और ऊपर से दवाई का खर्चा आता है। अगर ये योजना ना होती, अपनी जेब के अनुसार ये 80 करोड़ लोग डॉक्टर का चयन करते हैं। पैसे वाले लोग अपनी बीमारी के अनुसार डॉक्टर का चयन करते हैं कि कौन स्पेशलिस्ट है। बहुत से लोग हैं प्लेन एमबीबीएस को तो दिखाई नहीं सकते कभी, और एक तरफ झोला छाप डॉक्टरों की बहुत जोर की प्रैक्टिस चल रही है। उसके पीछे अशिक्षा और गरीबी है। तो जाता है, डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, वो डॉक्टर कहते हैं 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा। अरे भाड़ में जाए कोर्स, ये सब मैंने सुना है। ये 35 रुपए हैं मेरे पास कुल, आजकल वो बढ़ गए हैं, 70-80 हो गए। इसमें जितनी दवाई आती हो उतनी दो, मैं कोर्स वोर्स से मुझे मतलब नहीं। तब वो नीली पीली गोली बिना रैपर के कागज में लपेट के दे देता है, और उससे जो किडनी खराब होती है वो आपको ठीक करनी पड़ती है गलत दवाई से। इसलिए हमारी सामाजिक दायित्व बहुत है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बहुत है। एम्स में आने के बाद तो केवल ट्रीटमेंट नहीं, आपका व्यवहार को भी बहुत देखा जाता है कि कैसे बातचीत की, कैसा क्या तरीका था उनका, और गजब की साइंस है साहब आपकी। अभी मैं एग्जीबिशन में देख रहा था, क्या क्या कर रहे हो आप। हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, पेंक्रियाज ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लंग्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। गजब, इतनी ब्रॉड है और इतनी लिमिटेड है कि मेरा एक नौकर जो मेरा ट्यूबवेल चलाता था, खेती करता था, 8वीं फेल था। एक दिन मेरे ही पैसे लेके भाग गया। चलो भाग गया, कोई बात नहीं। 3 महीने बाद, उसका नाम था राम नारायण धीमर, तो राम नारायणा गांव में बोलते थे जो आदत है। 3 महीने बाद वो डॉक्टर RN कश्यप होके लौटा। मेरे गांव से 30 किलोमीटर दूर गांव एक टेढ़वा याकूबपुर है, मुझे नहीं पता वो MBBS था या कौन था। उनके यहाँ उसने पुड़िया बांधी 3 महीने, और नोट कर लिया सर्दी में ये, बुखार में ये, दस्त में ये, जुकाम में ये। बस वो कहीं दुनिया में प्रैक्टिस करता तो बेवकूफ बनाता तो मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं होता। वो हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर के कस्बे में एक बोर्ड लिखा डॉक्टर RN कश्यप, और एक कुर्सी मेज लेके बैठ गया। एक बार छुट्टी में मैं जा रहा था तो उससे हाल चाल पूछने के लिए केवल रुक गया कि गांव में सब ठीक तो है, क्योंकि वो कस्बे में था। तो एक स्टूल पे मरीज बैठा था, तो स्टेथोस्कोप से, शायद मैंने पिछली बार सुनाया या नहीं सुनाया, स्टेथोस्कोप से वो उसको देख रहा था। पहले तो सिर देखा, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि अभी तक हमारे डॉक्टर ने तो चेस्ट ही देखा था। फिर उसने चेस्ट देखा, फिर उसने कहा जीभ खोलो, तो मैंने कहा अच्छा जीभ हमसे भी डॉक्टर खुलवाते थे, तो जीभ पर भी आला रख दिया। फिर घुटने देखे, कमर देखी, पैर देखे। मजेदार बात है यह है कि मरीज ये कह रहा है, हमारे यहाँ एक MBBS डॉक्टर थे, डॉक्टर सुभाष 50 रुपए लेते हैं, केवल सीना देखा, इनने 5 रुपए में पूरा शरीर चेकअप कर लो। मूर्ख लोग रहेंगे तो बुद्धिमान लोग राज करेंगे। मैंने अपने CMO से कह रखा है, मैं हर प्रकार की सिफारिश कर सकता हूँ, लेकिन ये एक भी डॉक्टर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों ने जब 15-16 घंटे पढ़ा, कोटा उठा गए, तब जाके
नीट क्वालिफाई कर पाए। फिर बहुत पढ़ा तो जाके पीजी में हुआ है, और अभी भी मैं अनुभव नहीं है तो उनकी राय कम मानता हूं। और ये कौन से डॉक्टर हैं जो शरीर पर, इंसान के शरीर पर प्रयोग कर रहे हैं? तो बहुत ब्रॉड है ये साइंस और बहुत लिमिटेड है, लेकिन कुछ सख्त कानून बनने चाहिए, और वो बनाना तो हम ही लोगों को है, लेकिन उसका परिपालन अधिकारियों को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के शरीर पर इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट झोला छाप लोग कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये एक हिसाब से कल्पेबल होमोसाइड है, गैर इरादतन हत्या है ये, जो लोग ऐसे करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उनका ख्याल रखना अपने जो आते हैं। पैसे वाले तो मेदांता चले जाते हैं, मैक्स चले जाते हैं, अपोलो चले जाते हैं। एम्स आने वाले लोग में ज़्यादातर 80 करोड़ जो वो लोग हैं वही आते हैं, जिसमें आप देखते होंगे एक राज्य विशेष के लोग ज़्यादा आते होंगे, नाम नहीं लूँगा। मैं सुंदरलाल अस्पताल बनारस गया तो मरीजों से बात की, कहाँ से हो? इस राज्य से, इस राज्य से। मैंने कोई बस आई है उस राज्य से? तो मैं सोचा आगे सब बैठे, पीछे पूछा आप कहाँ से, क्योंकि मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज राज्य का नाम लेके नहीं बनाना चाह रहा। कहा इस राज्य से। 17 में 14 लोग एक पड़ोसी राज्य से आए थे। 15वां आजमगढ़ का था, 16वां बलिया का था और 17वां काशी का था, जहां पर वो अस्पताल है। तो दो कारण है, उस राज्य में गरीबी भी होगी और बीमारी भी ज्यादा होगी। गरीबी होती है तो बीमारी अपने आप आती है, क्योंकि अशुद्ध जल पीते हैं, कम कैलोरी का खाना खाते हैं। तो ये आयुष्मान कार्ड मुझे अच्छा लगा कि 20,000 लोग आपके यहाँ इसका लाभ ले चुके हैं। इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जो वैभव है, जो आप लोग मेरे से कहते हैं दिल्ली के लोग, बघेल साहब पेठा ले आना, हाँ लाएंगे, तुरंत कहते हैं पंछी वाला लाना। ऐसी ही एम्स ने प्रसिद्धि पाई है। तो उसके लिए मैं पहले डायरेक्टर से लेके मौजूदा डायरेक्टर और सभी लोगों का, ये एक टीम स्पिरिट से काम होता है, सबके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको अवार्ड मिला है उनको, अवार्ड वाले तो कॉमन मैन होते ही नहीं है, ये थोड़े जुनूनी लोग होते हैं। साइको कहूँ तो ठीक नहीं है, लेकिन ये जुनूनी होते हैं। मैं 2 शेर इनको सुनाना चाहूंगा। ये वो लोग हैं जिन पर ये 2 शेर लागू होते हैं कि जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और मेरी जिंदगी एक मसलसल सफर है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। यहाँ तक सीमित नहीं रहना है। आपकी ये सेवाएं, आपकी ये खुशबू एक दिन राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में आपको पद्म पुरस्कारों तक लेके जाएंगी, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। और इनाम का तो गजब का, इसका तो लाइफ पे कितना असर पड़ता है। 9 साल की उम्र में मेरे टीचर ने एक अंताक्षरी प्रतियोगिता में मेरा नाम लिखा दिया। फिर बहुत तैयारी कराई, रामचरितमानस की बहुत मेरे को चौपाइयाँ रटाई। मैं अपना ब्लॉक जीता, तहसील जीता, जिला जीता। शायद पिछली बार मैंने ये अनुभव बताया था। फर्स्ट आने पर इनाम के तौर पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली, लेकिन उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूं। उसका कारण है कि 9 साल की उम्र में उस इनाम ने पैरों की कपकपाहट को दूर कर दिया, माइक का डर दूर कर दिया और स्टेज का फोबिया दूर कर दिया। इसलिए मैं बहुत मेडिकल साइंस नहीं जानता हूँ, लेकिन आप आके देख लो, आप कितने भी बड़े हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे हो, देवदूत हैं आप लोग। भगवान ने पूर्व जन्म में आपने जल नहीं चढ़ाया होगा, शहद और दूध शंकर जी पे चढ़ाया होगा जब एम्स में आपको सेवा करने का अवसर मिला। ऐसा मेरा विचार है। देवदूत हैं आप लोग, लेकिन देवदूतों के सामने मेरे पैर नहीं कपकपा रहे। मैं एनासिन की स्पेलिंग भी नहीं जानता, लेकिन मैं डर नहीं रहा हूँ। ये वो इनाम है, वो साबुन की टिक्की है। तो आपको जो अवार्ड मिले हैं वो आपका उत्साहवर्धन करेंगे, और किसी दिन, और ये मिलते रहना चाहिए। देश की आबादी बहुत है, काम बहुत है, पद्म पुरस्कारों की संख्या बहुत कम है। इसलिए संस्था को
ट्रस्ट को, सोसाइटीज को, विभिन्न क्लब्स को समाज में किए गए अच्छे कार्यों के लिए निश्चित तौर से सम्मानित करते रहना चाहिए, उससे प्रेरणा मिलती है। सबको बधाई और धन्यवाद। Thank you, sir, for those encouraging and enlightening words. I request the Dean, Director, and Registrar to present our chief guest with a token of our appreciation, the mementos. Thank you, sirs. Now, our Registrar Professor Rath will propose the vote of thanks. Chief guest of today's program, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, Government of India, Professor S.P. Singh Baghel ji, AIIMS Diamond Jubilee Orator and Honorable Member of Niti Aayog, Government of India, Professor V.K. Paul, Director of AIIMS, Professor M. Srinivas, Dean Academic, Professor Minu Bajpayee, distinguished guests, faculty colleagues, employees, residents, students, ladies and gentlemen. It is indeed my proud privilege to propose the vote of thanks for this meeting on behalf of the AIIMS family. Every year on 25th September, we reaffirm our commitments to the goals of the institution on its foundation day. We are greatly impressed by the progress of the institution has made in educational activities, patient care, and research over the last 68 years. Our endeavor will continue to advance the vision set by our founders and to emerge as a leading policymaker in those domains. Esteemed guests, your participation in today's program will provide us with great inspiration. I am confident that with your blessings, guidance, and support, the efficiency of our institution will further be strengthened. I express my sincere thanks to the chief guest who, despite his busy schedule, agreed to be part of this function and shared his valuable time with us. Thank you, sir, for always being with us and encourage us for every time, whether it is convocation ceremony or Foundation Day celebrations today. On behalf of the Institute, I thank our own Professor V.K. Paul, Honorable Member of Niti Aayog, for delivering the AIIMS Diamond Jubilee Oration. Thank you, sir, for sparing your valuable time with us. I also thank Professor M. Srinivas, the Director of AIIMS, for his encouragement, constant support, and guidance, which made today's program possible. I extend my heartfelt thanks to Professor Minu Bajpayee, the Dean Academic, for always being there to personally supervise any of the events we conduct here. Yesterday, he was here along with Professor K.K. Burma, the Dean Research, and Professor Naval Kishore Bikram, the Associate Dean Exam, to evaluate all the posters of the exhibition. So special thanks to all three of you.
We also thank the CMAT, engineering section, audiovisual team for their efforts in planning and management of exhibition, technical activities, and the cultural programs planned for the evening today. I take the opportunity to acknowledge contribution of my esteemed colleague at academic section, Professor Rajiv Kumar, the Associate Dean Academic, the exhibition committee under chairmanship of Professor Piyush Sahani, cultural event committee under leadership of Professor Kalpana Luthra, cafeteria committee under chairmanship of Professor Vijay Mathur, media and protocol division under leadership of Professor Rima Dada and Professor Nand Kumar, and all the staffs of academic section for organizing this event. My special thanks to Mr. Hem Pandey and Mr. Mrutyunjay Parida of academic section for their commendable work and support in organizing this Institute Day. We also extend special thanks to the Ministry of Health and Family Welfare for their support. I thank the members of our institution that includes students, faculty, staffs of the engineering section, sanitation, and security personnel who contributed maximally for organizing this event. And of course, DDA Madam, I am forgetting Tony again and again. Thank you, Tony, for whatever you are doing for us. Last but not the least, I regret any shortcoming in this, organizing this event or missing out the contribution of anyone. Thank you all. A couple of things before we finish. This evening, the cultural program will start at 5 in the evening. You're all invited to the cultural extravaganza that is going to be there. Soon after the national anthem, there will be refreshments that would be available for the dignitaries in the committee room, for the faculty in the dining area behind the boardroom, and for all staff, students, as well as other members of the AIIMS family in the second floor cafeteria. So please do not forget to have some refreshments after this program is over. The final rendition would be of the national anthem, for which we have 6 students from the College of Nursing: Neha, Lakshmi, Rishika, Vandana, Khushi, and Bastabika. So please stand for the national anthem and please do not clap afterwards. Thank you all for being a wonderful audience, and a very happy Institution Day to all of you. Thank you.